Think of Burj Khalifa. It stands tall because of its strong rock solid base. सेम वे आपके अकाउंटिंग नाम के बुर्ज खलीफा को रॉक सॉलिड बेस प्रोवाइड करते हैं सर्टन प्रिंसिपल्स. Those principles are known as generally accepted accounting principles or GAAPs. These principles provide a strong base to your accounting नाम का बुर्ज खलीफा. And if your base is strong, if you are very clear with these 14 principles, then every journal entry, every ledger, every financial statement will be cracked very easily by you. In today's session, we will be covering all 14 principles in a one-shot view. Hello everyone and welcome back to the Commerce Element. Let's start with making your base clear. Starting with the first principle, that is business entity concept, which is also known as separate entity concept. This concept says that business and businessmen are not same. Both are separate entities. Because business and businessmen are separate entities, because every business follows business entity concept, the businesses records entries of capitals, drawings, interest on capital and interest on drawing. Considering business and businessmen are two separate entities. The second gap is going concern. Whenever a businessman starts the business, he assumes that business will be continued for a long period of time. It is not going to get winded up sooner. Because the businessman assumes that the business will be carried on for a long period of time, he will purchase fixed assets rather than taking them on rent. Because he assumes that business will be carried on for a long period of time, he will be depreciating fixed assets every year by small amounts. Moving on next to accounting period. Any businessman is always interested in knowing the results of the business. That is, profit हुआ कि loss हुआ, कितना हुआ. And thus accounting period divides the business life into fixed period, जिसके बाद आप आपके business का results check कर सकते हो. That fixed period can be year also, it can be a quarter also, it can be half yearly also. So at the end of every fixed period, say suppose a year, you will be closing your books of accounts and you will be arriving at the results of the business, that is profit or loss. The year can be financial year, 1st April से 31st March वाला. The year can be a calendar year also, 1st Jan से 31st December वाला. Because of computers in accounting, you can prepare quarterly records, you can prepare weekly reports even, but every time at the end of 1 year, the books will be closed and profits and losses will be measured. Moving on next to the money measurement concept. Whatever entries, whatever transactions are recorded in your firm are always recorded in monetary terms only. We never record any entry in books of accounts in kgs or meters or liters and so on. Every time the transaction is measured in monetary terms and recorded in monetary terms only, that is in terms of rupees when we talk of India. Moving on next, full disclosure concept. It says that provide all material information in books of accounts. You don't judge that whether the information is very small or whether the information is very large. Provide every bit of information, whether small or large. Let the concerned parties decide कि उनके लिए कौन सी information study करना ज़रूरी है. आप decide करके आप biasness नहीं रखो. That is, disclose everything, every transaction which are of financial nature, which are related to your business. That is what your full disclosure concept says. Moving on next, consistency concept. Consistency matlab use of same accounting method or same accounting practice year by year, every year. Suppose for example, अगर आप आपके fixed asset को depreciate करने के लिए
स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन का यूज करते हो, every year use straight line method only. If you are using return down value method of depreciation, every year use the same method. अगर आप आपका स्टॉक का वैल्यूएशन लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करते हो, then every time use LIFO method only. If you are valuating stock using FIFO method, first in first out, every year use the same method. Consistency maintain करने से क्या होगा? You will have similarity, you will have uniformity in your books of accounts and uniformity के कारण comparison easy होगा आपके फर्म के लिए भी, यूजर्स के लिए भी, and thus comparison के basis पे you and the users of your accounting information will be able to take a rational decision and thus always maintain consistency. The next is conservatism or prudence. It says that record anticipated losses and not the profit. अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि फ्यूचर में बहुत छोटू सा भी चांस है इस चीज से लॉस होगा, भले चांस छोटू सा है, भले लॉस फ्यूचर में होने वाला है, बट उसका रिकॉर्डिंग अभी होगा. बट अगर आप अज्यूम करते हो, अगर आप एस्टिमेट या एंटिसिपेट करते हो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस है, फिर भी उसे आप अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब एक्चुअली प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करोगे. दैट इज व्हाट योर प्रूडेंस सेज, एंड दैट्स द प्रूडेंस कांसेप्ट सेज दैट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड नॉट द प्रॉफिट्स. Now, whenever the businessman is valuating stock, stock can be valued at book value, it can be valued at market value as well. So, book value या market value, whichever is lesser, businessmen will record stock with that value as per your conservatism concept. आपके जो भी डेटर्स है उस पे आप प्रोविजन रखते हो फॉर बेड और डाउटफुल डेट्स, तो वो प्रोविजन ऑन बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स is recorded in your books because of this concept only. Moving on next to the materiality concept. Materiality concept says that record only those items that are significant for decision making. छोटू छोटू फालतू फालतू आइटम्स रिकॉर्ड नहीं करो. ऐसी छोटू छोटू और फालतू आइटम्स रिकॉर्ड करके डोंट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अदरवाइज काम की इंफॉर्मेशन ढूंढने में आपको फालतू इंफॉर्मेशन भी मिलेगी एंड इट विल वेस्ट योर टाइम. एंड thus it says that record only those items which are significant. Now this principle is a bit contradicting with the principle of full disclosure. Full disclosure बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड करो, बट मटीरियलिटी बोलता है कि ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करो. सो एज अ बिजनेसमैन यू नीड टू डिसाइड वेदर योर फर्म विल बी फॉलोइंग दिस और विल बी फॉलोइंग दिस कंसेप्ट. मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द ऑब्जेक्टिविटी. इट सेज दैट ऑल योर रिकॉर्ड्स शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस. दैट इज जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्री करते हो, दोज एंट्रीज ऑलवेज शुड बी सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दैट इज बाय वाउचर, एंड एंट्रीज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन ऑफ द बिजनेसमैन or personal bias of the accountant. And thus objectivity says keep all your records objective manner में, that is सबको verifiable status में रखो, सबके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखो एंड देन एंट्री करो, नॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल ओपिनियन. मूविंग ऑन नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या द ड्यूअलिटी एस्पेक्ट. The dual aspect concept says that whatever entries you make in your books of accounts will always have two sides, debit as well as credit. If one transaction is of 5,000 की किसी ना किसी अकाउंट में डेबिट एंट्री होगी, सेम टाइम सेम 5,000 की किसी ना किसी अकाउंट में क्रेडिट एंट्री भी होगी. दैट इज every debit will have corresponding credit effect as well.
Because of your duality concept, every time your A is equals to C plus L, equation stands true. The duality aspect says that आपके business के assets की value will always be equal to the value of capital plus liability. Moving on to historical cost or the cost concept. The concept says that record assets at purchase price and not at market price. सपोज आपने कोई मशीन परचेज किया 1 लाख रुपीज का, मशीन जहां से आना था आपके फैक्ट्री में आया, आपने 20,000 ट्रांसपोर्टेशन का पे किया। 1 लाख का मशीन, 20,000 का ट्रांसपोर्टेशन, मशीन आपके फैक्ट्री में आ गया, आपने उसको इंस्टॉल करवाने के 30,000 फर्दर पे किए। सो 1 लाख का मशीन आपने परचेज किया, आपके फैक्ट्री प्रमाइसेस में आया और वो वर्किंग कंडीशन में आया, तब तक आपने 20 और 30,000 एक्सपेंस उस पर इनकर कर दिया था। सो अब आपका मशीन 1 लाख का नहीं हुआ, आपका मशीन 1,50,000 का हुआ। सो कोस्ट कंसेप्ट सेज दैट व्हेनेवर यू रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट, यू रिकॉर्ड इट विद दैट प्राइस जिससे आप परचेज करते हो, प्लस एड ऑल दोज एक्सपेंसेस जो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक इनकर करते हो, and like that decide the value of your asset and show. अब 1,50,000 का एसेट आपने शो तो कर दिया, 2 महीने के बाद आपको पता ही है कि इफ यू ट्राई टू सेल इट ऑफ 150 के मशीन के 150 नहीं आने वाले, हार्डली 80-90,000 आएंगे। तो वो 80-90,000 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर एसेट। आपको पता भी है कि 1,50,000 का मशीन जो मैं बुक्स में शो कर रहा हूँ उसका 150 मार्केट में प्राइस ही नहीं है, उसका प्राइस तो आप मार्केट में 2 महीने के बाद 80,000 हो गया। Still you will keep on recording the asset with its purchase price and not market price as per the historical cost concept. Moving on to revenue recognition concept, which is very important because further आप जब entries करोगे ये concept आपको बहुत काम आएगा. So what this concept says, it says that record revenue when earned and not when cash is received. For example, sold goods of 5,000 to X. X को 5,000 के goods दिए, X ने हमें पैसे दिए या नहीं दिए वो मेंशन नहीं किया, so we assume that the transaction is credit transaction. X को 5,000 के गुड दिए तभी आपने X से 5,000 का रेवेन्यू अर्न कर लिया, भले X ने अभी 5,000 कैश में आपको नहीं दिया। 5,000 कैश मे बी 2 महीने के बाद देगा, 6 महीने के बाद देगा, मे बी नेक्स्ट ईयर भी देगा, मे बी बेड डेट्स भी हो जाए। Even if 5 कैश नहीं मिला, this 5 will be recognized as revenue because जैसे ही आपने X को सेल किया, you have got right to recover that 5,000 from X. So you are the rightful person to recover this 5,000 and thus this 5,000 will be recorded as your revenue because it is earned the same time when you made sales to X. Another example, received 10,000 for advance order from Y. अब यहाँ पे आपको 10,000 Y से मिल गए, क्यों मिले? उससे बोला मेरा एडवांस में ऑर्डर लिख लो, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर मेरे घर पे माल भेज देना। आपको 10,000 मिल भी गए, क्या आपने गुड्स की डिलीवरी की? नहीं, आपको तो एडवांस में मिला, सो यू डोंट हैव राइट टू गेट दैट 10,000, यू हैव नॉट अर्नड दैट 10,000 बिकॉज 10,000 के एक्सचेंज में अभी उसे गुड्स तो देना बाकी है। सो इवन इफ आपको 10,000 रुपीज वाई से कैश में मिल गए, बट स्टिल दिस 10,000 विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज योर रेवेन्यू बिकॉज यू आर नॉट द राइटफुल पर्सन टू अर्न दिस 10,000, आपको तो एडवांस में मिला है। सो हियर इवन इफ कैश नहीं मिला था, मिलने वाला था, still it was recognized as revenue because you had earned it. Here cash मिल गया है, but still you are not recognizing it as your revenue because you have not earned it. And that is what your revenue recognition concept says, that record revenue when it is earned and not when cash is received. Here you have earned it, you have recorded it as revenue. Here though the cash is received,
but still it is not recorded as revenue. Next is matching concept. Matching concept says that match the expenses with related revenue of same period. For example, if we are talking about the year 2025, 2025 के ईयर में आई हैव रिसीव्ड 10,000 रुपीज की इनकम इन कैश. मुझे 10,000 रुपीज कैश में इनकम मिल गई. बहुत सारे सोर्सेज से इनकम मिली, अ टोटल ऑफ 10. आई हैव 10 की इनकम ऑन माई हैंड एज कैश इनकम. नाउ 10,000 में से दे से के 2,000 इनकम तो आपको एडवांस में मिली है. हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है एडवांस वाली इनकम को अभी आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे. सो बिकॉज ये 10,000 जो मेरे हाथ में कैश में है उसमें 2,000 रुपीज तो एडवांस में मिली हुई इनकम है, हम 10,000 में से उसे हटा देंगे. सो अब कोई पूछेगा आपकी करंट ईयर 2025 की इनकम कितनी, आई विल से इट इज 8,000. बट वेट, 10,000 मिल गया बट अभी भी बोल रहा है कि 5,000 इज ड्यू टू रिसीव. मिलने वाला है, मिला नहीं. 5,000 सपोज एक्स के सेल की इनकम होने वाली है, मिलने वाली है बट अभी तक कैश में मिली नहीं. Even if it is not received in form of cash, but still I have earned it as per the revenue recognition concept, and thus this 5,000 will be added as income of 2025. Now अब कोई फाइनली पूछेगा कि आपकी इस साल की इनकम कितनी, I will say that my this year's income is 13,000. भले आपको कैश 10 ही मिला हो, वो 10 में 2 तो नेक्स्ट ईयर का था, आपने हटा दिया. 10 तो मिल गया बट 5 अभी भी मिलना बाकी है, आपने उसे ऐड कर लिया, एंड लाइक दैट योर इनकम इज 13. सेम वे इफ वी टॉक ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 2025, आपने जो भी एक्सपेंसेस पे किए, बहुत सारे एक्सपेंसेस मिलके कैश में 5,000 रुपीज पे किया. कैश में जो 5,000 एक्सपेंस पे किया उसमें 1,000 ऐसा एक्सपेंस है जो प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर का इस साल पे कर दिया. भले कैश गया इस साल बट है तो वो किस साल का, नेक्स्ट ईयर का. आपने तो एडवांस में पे कर दिया है. जैसे आप एडवांस रिसीव रेवेन्यू को करंट ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं करते, सेम वे आप एडवांस पेड एक्सपेंस को भी करंट ईयर में इंक्लूड नहीं करोगे. सो माई एक्सपेंस एज ऑफ दिस विल बी 4,000. स्टिल इट इज से दैट 5,000 कैश में पे तो कर दिया बट अभी भी किसी का इस साल का 2025 का 2,000 रुपीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है. जैसे ये रिसीव करना बाकी था वैसे ये 2,000 पे करना बाकी है. भले बाकी है बट एक्सपेंस तो इसी साल का है, सो दैट एक्सपेंस विल बी एडेड. And now my 2025 years expenses will be a total of 6,000. Now my matching concept says that match the expenses with related revenue of same period. These are the expenses and these are the related revenues and both are of 2025. I'll match both of them and I'll say that I have a profit of rupees 7,000. I hope this is clear to you. And the last one is accrual concept. Record incomes and expenses when they are earned or incurred, not when cash is exchanged. This is the best example. आपने कैश रिसीव तो कर लिया बट आपने 10,000 को इनकम कंसीडर नहीं किया, आपने 13 को किया. Because this is actually the earned income of current year's 12 months, and thus it will be recorded not with cash but with the amount which you have actually earned. Same way आपने कैश में 5,000 पे तो कर दिया बट करंट ईयर के 12 मंथ का एक्सपेंस 5 नहीं है, भले कैश 5 पे किया, एक्सपेंस तो 6,000 बनता है. And as of accrual concept, you will be recording your incomes and expenses which are actually earned or which are actually incurred for this year's 12 months and not which you have received in cash or which you have paid in cash.
So all these three are related to each other. And I hope that the entire foundation of your Burj Khalifa is now very clear to you. In the next session, we will be going on with accounting equation and one shot. So until the next session, stay tuned and goodbye.